HDFC Ergo का Optima Secure Plus. Now, this plan has immensely number of videos on YouTube and countless number of reviews that you will see. The problem is nobody is talking about what is missing in this plan, because every plan will come with excellent features, but it will also come with a lot of things that are missing. And that is what this video is about. What is missing in HDFC Ergo Optima Secure Plus? Now, before we start, what we will do is we will first understand the basics. We will understand quickly what is covered in this plan so that all of us have a recap about exactly what is covered in this plan. But we will quickly after that move into what is missing so that you know exactly what you're not going to get when you don't buy this plan. Plus we will also tell you ये जो सब चीजें हैं जो मिसिंग है वो किस प्लान में अवेलेबल है. Lastly, what I will be doing is I will give you a verdict of exactly what you should be doing when you now have the knowledge about what is missing in HDFC Ergo Optima Secure Plus. Mahavir Chopra, the founder and chief executive officer of Beshak.org. So let's start with, like I said, the main benefits of the plan before we get into what's missing. और अगर आपको इसके बारे में ये हम बहुत quickly करेंगे, अगर आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में समझना है, then we have obviously done a detailed comprehensive video for which you can get the link in the description. और एक आई बटन है यहाँ पे, उसको भी आप क्लिक करेंगे तो वो वीडियो पे पहुंच जाएंगे. So let's start with first, like I said, understanding the top features, the core benefits, and everything else that you should know in HDFC Ergo Optima Secure Plus. The first thing is the USPs. तो USPs बेसिकली जो इसमें है, सबसे इंटरेस्टिंग जो USP है, जो सबसे ज्यादा HDFC वाले और उनके एजेंट्स बात करते हैं, इज दी 2x कवरेज फ्रॉम डे वन. मतलब बेसिकली अगर आप 10 लाख का कवर लेते हो तो आपको डे वन से 20 लाख का कवर मिलता है. नेक्स्ट इज लिमिटलेस एड ऑन. लिमिटलेस एड ऑन का मतलब है कि आपको आपकी पॉलिसी लाइफ टाइम में जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स है उस सबके बेसिकली बीच में आपको एक टाइम पॉलिसी लाइफ टाइम में अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड मिलेगा. राइट, इसमें 2 बार भी मिलता है अगर आपका सम इंश्योर्ड 50 लाख या 50 लाख के ऊपर है. इनफाइनाइट बेनिफिट करके एक और यूएसपी है जो बहुत इंटरेस्टिंग है. ये इनबिल्ट है, इसमें आपको गारंटीड बोनस मिलता है. द सम इंश्योर्ड इंक्रीजेस बाय 100% एवरी ईयर और अक्यूमुलेशन की कोई लिमिट नहीं है. ये बहुत बड़ा फीचर है कि आप अगर 10 लाख से शुरू करते हो और आपको 20 साल हो गया तो आपके 10 लाख हर साल बढ़ते जाएंगे वेदर यू क्लेम और डू नॉट क्लेम. सो इट इज अ वेरी वेरी गुड फीचर. Next is maternity benefit. Maternity benefit, one of the best plans that I basically feel that has maternity benefits so far. And basically it offers you a cover of 50,000, 1 lakh, 1.5 lakh and 2 lakh. Waiting period इसका 2 साल है. Now moving on to the core benefits. Core benefits वो benefits होते हैं जो actually आपके major part of the hospital bill pay करते हैं. Quickly understanding, room rent limit जो है इसमें कोई room rent limit नहीं है. Any room है basically, आप कोई भी room choose कर सकते हैं. Pre and post hospitalization जो है वो 60, 180 days है. 60 days pre, 180 days after. डे केयर ट्रीटमेंट, डोमिसिलरी ट्रीटमेंट, मॉडर्न ट्रीटमेंट और ऑर्गन डोनर, ये सारी जो चीजें हैं ये सब कुछ अप टू एसआई अवेलेबल है, अप टू सम इंश्योर्ड अवेलेबल है. आपकी जो पॉलिसी की लिमिट है वही लिमिट एप्लीकेबल होगी और कोई सब लिमिट नहीं है. तो ये बेसिकली जो है ये प्लान के इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो आपको पता होने चाहिए. अब हम मूव करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो में, वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज मिसिंग इन HDFC Ergo Optima Secure Plus. नाउ यहाँ पे एक स्क्रीन है, यहाँ पे मैंने सारी चीजें डाली हुई है तो आपको मैं एक एक करके समझाऊंगा कि क्या क्या है उसमें. फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से प्लान में ये इनोवेटिव फीचर अवेलेबल है. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट बेनिफिट दैट यू शुड बी नोइंग दैट इज नॉट अवेलेबल इन HDFC Ergo Optima Secure Plus. इट्स कॉल्ड बेसिकली द ऑप्शन टू चूज अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड. तो आप अगर HDFC Ergo Optima Secure Plus लेते हैं तो आपको 2 करोड़ तक का ही सम इंश्योर्ड मिलता है. आप अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड आपको नहीं मिलता. ये 4 प्लान में अवेलेबल है. बेसिकली कौन से है ये 4 प्लान? बेसिकली एक है ICICI Lombard Elevate, नीवा बुपा रीअश्योर 3.0, केयर अल्टीमेट केयर और लास्ट है आदित्य बिरला एक्टिव युवा जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है. Okay, so the next basically feature that's not available in HDFC Ergo Optima Secure is called the lock the clock feature. It is basically a feature where your age is frozen when you get into the plan, when you enter the plan, and your premium remains the same till you do not make a claim. So आप अगर पॉलिसी में let's say 30 years की एज में एंटर करते हैं तो 30 ईयर का जो भी प्रीमियम है वो पॉलिसी में जो भी आप पॉलिसी ले रहे हैं वही प्रीमियम आपको लगेगा फॉर एवर till you do not make a claim. In some policies, it is also till 55 years, right? Which are these 2 companies that are offering this plan is what we are going to understand. The first plan is basically Niva Bupa Aspire and also Reassure 3.0. The second plan is Star Health Superstar. ये 2 plan में ये feature available है. HDFC Ergo Optima Secure Plus में available नहीं है. Moving on to the third important feature that's not available in this plan. Wellness program. Wellness program आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है. इसमें होता क्या है? It basically gives you a discount based on the activities that are defined in the insurance company's app. So for example, the most classic feature that most insurance companies are offering is something called number of steps. तो आप number of steps complete करो, एक number of days के लिए complete करो, आपको discount मिलता है. ये 6 कंपनी आज की तारीख में ऑफर कर रही है, but HDFC Ergo is not offering this. Which are these 6 companies? Let's understand with the name of the plans. The first one is basically Aditya Birla Active One. Aditya Birla has been the foremost in basically coming up with this feature. Then ICICI Lombard Elevate. Then Niva Bupa Reassure 3.0. Manipal Cigna Sarvaparam Plan.
देन देयर इज केयर सुप्रीम एंड देयर इज टाटा एआईजी मेडिकेयर प्रीमियर। तो ये 6 कंपनी ऑफर कर रही है, बट एचडीएफसी अर्गो का जो ये प्लान है वो ऑफर नहीं करता है। नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन टू ग्लोबल कवर। ग्लोबल कवर सबके लिए ऑफकोर्स रेलेवेंट नहीं है, बट इट इज रेलेवेंट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर बेसिकली थिंकिंग कि मेरी जो ट्रीटमेंट है अगर वो इंडिया में नहीं हो सकती फॉर सम रीजन, एंड इफ आई वांट टू गो अब्रॉड, देन व्हाट हैपेंस, विल आई बेसिकली बी एबल टू कवर माई सेल्फ और नॉट। नाउ अ रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी covers you for treatment only in India. They did not cover you for treatment outside, but there are companies which are offering add-ons. उसके basis पे आप बाहर भी treatment ले सकते हो। इसके obviously terms and conditions है जो हर plan के अलग-अलग होते हैं, वो obviously यहाँ पे मैं नहीं समझा सकता, but overall global cover का जो एक scope है वो HDFC Ergo Optima Secure में है ही नहीं, right? But 5 कंपनीज जो है उसमें अवेलेबल है। कौन सी है ये 5 कंपनीज? पहली कंपनी का नाम है ICICI Lombard Elevate, दूसरी कंपनी का नाम है नीवा बुपा रियश्योर 3.0, थर्ड इज टाटा एआईजी मेडिकेयर प्रीमियर, फोर्थ इज बजाज माई हेल्थ केयर एंड फिफ्थ इज इंडसइंड हेल्थ इन्फिनिटी। तो ये 5 कंपनी में मिलता है, बट आपको एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लस में नहीं मिलेगा। नाउ मूविंग ऑन टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर दैट एवरीबडी हु इज अ यंग एडल्ट वुड वांट टू नो अबाउट इज बेसिकली न्यू बॉर्न बेबी कवर। न्यू बॉर्न बेबी कवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं, आपका मेटर्निटी का कॉस्ट इतना ज्यादा नहीं होता है जितना बेबी कवर का होता है, और रिस्क सबसे ज्यादा बेबी के लिए होता है कि उसकी जो कॉस्ट है, एक मेटर्निटी कॉस्ट विल गो टू लेट्स से 2 लाख 3 लाख, दैट्स इट, राइट। बेबी आफ्टर इट गेट्स बॉर्न, इफ इट इज क्रिटिकल फॉर सम रीजन, खुदा ना खास्ता फॉर अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा होता है तो बहुत ज्यादा खर्चा हो सकता है। आई हैव सीन पीपल हु हैव स्पेंट लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज दैट गॉन इनटू डेट टू सेव देयर बेबी, एंड दैट्स व्हाई दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर किसी के लिए भी कवर ले रहे हैं जो यंग एडल्ट है और उनको मेटर्निटी सोच रहे हैं कवर लेने के लिए, उससे ज्यादा मेटर्निटी का जो बेनिफिट है वो न्यूबॉर्न बेबी कवर बेनिफिट है। 5 कंपनीज ऑफर करती है, एचडीएफसी अर्गो का प्लान ऑफर नहीं करता है। कौन सी है ये 5 कंपनीज? फर्स्ट प्लान इज आदित्य बिरला एक्टिव युवा, जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट, बजाज माई हेल्थ केयर, मणिपाल सिग्ना सर्वपरम प्लान एंड टाटा एआईजी मेडिकेयर प्रीमियर। ये जो बेसिकली 5 प्लान है ये ऑफर करता है, बट HDFC Ergo is not offering this. Now moving on to the other features which are also very very important. What is the next feature? The next feature's name is PD waiting period, specified illness waiting period का modification. ये क्या होता है? बेसिकली आप जब प्लान खरीदते हैं तो यूजुअली आपका एक स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड होता है फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज एंड फॉर स्पेसिफाइड इलनेसेस। ये जो वेटिंग पीरियड है, अगर आपको उसको कम करना है तो बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज है और प्लान्स है जो ऑफर करते हैं कि आप इतना पैसा ज्यादा दीजिए या आप थोड़ा एडिशनल प्रीमियम दीजिए, and they will basically reduce your waiting period. They will help you reduce your waiting period. 4 companies are today, 4 plans from 4 companies are offering this. HDFC Ergo Optima Secure does not offer it. Which are those plans is what we are going to understand. Aditya Birla Activ Yuva is offering it, ICICI Lombard Elevate is offering it, Niva Bupa Reassure 3.0 is offering it, and Care Health का Ultimate Care is offering it. अगेन, अगर आपको बेसिकली आपका वेटिंग पीरियड कम करना है, आपको आपका स्पेसिफाइड इलनेस कम करना है, फिर आपके लिए ये प्लान शायद सही नहीं है। इसमें ऑफ कोर्स एक छोटा सा कैविएट है कि बेसिकली एचडीएफसी अर्गो जो है उसमें एबीसीडी कवर है। अगर आपको एस्मा, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज है तो उसमें आपका वेटिंग पीरियड आप कम कर सकते हैं विद प्रीमियम, बट अगर और कोई भी डिजीज है तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। सो वो एक क्विक कैविएट था जो समझना जरूरी है। मूविंग ऑन टू ड्यूरेबल इक्विपमेंट कवर। ड्यूरेबल इक्विपमेंट कवर भी आजकल बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी दे रही है और ये 4 प्लान में जैसे है ऑफर्ड है। तो ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया बिकॉज दीज आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स दैट टिपिकली आर नॉट कवर्ड अंडर हेल्थ इंश्योरेंस। तो रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस में मेडिकल इक्विपमेंट जो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल इसका क्लासिक एग्जांपल जो है वो व्हील चेयर है। व्हील चेयर इज नॉट कवर्ड अंडर हेल्थ इंश्योरेंस बिकॉज इट्स कंसिडर्ड एन एक्सटर्नल इक्विपमेंट दैट आपको खुद को खरीदना होता है। वैसे प्रोस्थेटिक्स होते हैं जो कवर्ड नहीं होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में। नाउ देयर आर प्लान्स दैट आर गिविंग एन एड ऑन बाय विच यू कैन ऑल्सो कवर मेडिकल इक्विपमेंट। तो ये 4 ऐसे प्लान्स है जो ऑफर करता है, बट एचडीएफसी अर्गो ऑफर नहीं करता है। कौन से है 4 प्लान तो समझते हैं। एक्टिव 1 जो आदित्य बिरला का है, दैट इज कवरिंग इट थ्रू एन एड ऑन। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट, देन कम्स मणिपाल सिग्ना सर्वपरम प्लान, एंड देयर इज बजाज माई हेल्थ केयर का प्लान 1। इसमें आपको ये मिलेगा, पर इसमें आपको जो ये HDFC Ergo के प्लान में नहीं मिलेगा। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड अबाउट HDFC Ergo Optima Secure इज देयर ऑफर अराउंड 2x कवर, राइट। आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में मैंने भी आपको बताया स्टार्टिंग में, बट ये प्राइस के साथ समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो 2x कवर फ्रॉम डे 1 या 4x कवर का जो बेसिकली टिपिकल पुश या पिच है फ्रॉम HDFC Ergo, इट कम्स विद अ प्राइस और इट इज बेसिकली मैचेबल विद अदर कंपनीज इफ यू अंडरस्टैंड द प्राइसिंग। तो बेसिकली सारे इंश्योरेंस कंपनी जो हमने कंपेयर किए अभी तक, उसमें हमने वी हैव अंडरस्टूड वन थिंग that basically they are HDFC Ergo is charging only a little higher and then being able to give you a 2x cover. Of course, very recently they have introduced a lot of discounts for people who have never bought a policy in the past or have never had a claim in the past, so that they can slightly match it with the premiums of other insurance companies. But still, the thing that needs to be understood
is that basically there is a price that you pay for the 2x cover. And the last point, which is very very important, but a lot of people don't understand this, and this is something that I want to explain you today, is about incurred claim ratio. Incurred claim ratio क्या है? ये रेशियो ऐसा है कि आप एक इंश्योरेंस कंपनी अगर 100 रुपया प्रीमियम कलेक्ट करती है, फिर इंश्योरेंस कंपनी कलेक्ट 100 rupees premium, how much of that goes into claims? Typically we say that a company should have a ratio between 60 to 80%, so that we know that they are paying enough claims. At the same time, they are also making enough profits so that they do not get into a loss, and also they do not increase premiums in the future. Now, in case of HDFC Ergo, their incurred claim ratio is above the threshold that I typically ask people to look at. So 60 to 80 होना चाहिए. HDFC Ergo का जो incurred claim ratio है ये 87.04% है. इसका मतलब ये है कि in the long run, because the insurance company has having a ratio which is above 80%, the chances of this company increasing their premiums in the future is very very high, because their profit margins are very low. If that's something that you can understand, कि 100 रुपए में से 87 रुपीज जो है वो क्लेम में जा रहा है, उसके बाद कमीशन आते हैं, उसके बाद एक्सपेंसेस आते हैं, ये सारी चीजों के बाद इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट बनाती है. तो बचता ही बहुत कम है, 13% के आसपास बच रहा है, जिसकी वजह से वी फील दैट द प्रीमियम्स इन द लॉन्ग रन मे नॉट बी अफोर्डेबल और मे बी राइजिंग एट अ मच हायर रेट. So that was basically what we wanted to explain you in this video. ये हम जब देख रहे थे कि YouTube पे बहुत सारे videos है जो HDFC Ergo को समझाते हैं, HDFC Ergo के plans को समझाते हैं. We have also done a lot of videos where we've explained HDFC Ergo's plans, and we've explained them with a lot of enthusiasm, because they have been good plans with, and their claim performance has also been great. But it's very very important for all of us to understand what you're not getting from a plan as much as you're getting to understand what you get from a plan. Now, what is the final verdict? What is the final conclusion of why we made this video? It's very important to understand कि हर plan या हर चीज जो आप खरीदते हो is basically a deal, right? A deal always will have certain things that you will get and certain things that you'll have to leave on the table. What is important is to understand what are your real requirements, and based on that, whether the plan matches your needs. And that's where an expert plays a very very important role. आपको या तो खुद को आना चाहिए कि आपकी सारी नीड्स को आप लिस्ट डाउन करो और फिर मैच करो बेस्ट प्लान में जो मार्केट में अवेलेबल है. जस्ट डोंट गो बाय अ ब्रांड दैट इज वेरी वेरी पॉपुलर और सम फ्रेंड ऑफ यू हैज बॉट दिस प्लान. गो बाय व्हाट आर योर रियल नीड्स, chart them down, map it with basically the plan that is available in the market, then look at all the ratios, look at everything else, and then buy that plan, right? If you want any help in basically being able to do this well, our experts on our platform basically do it for free, and these are not call center agents, these are real experts with real experience. They'll basically help you, handhold you to understand all your needs, jot them down, then match them with what are the plans available in the market. Then they will also help you buy the policy, and very very importantly, they will be there with you at the time of claims lifelong. That is the promise that these agents, these advisors, these experts basically who have minimum 5 years of experience up to 20 years of experience offer on our platform, through our platform. If you're interested in basically having a consultation with these people, with these advisors, with these experts, you can click on the link in the pinned comment or in the description, and our team will basically help you set up an appointment as soon as possible. Please understand that this entire service is completely free and comes with a spam free guarantee. You will never be spammed. No one will call you after you say that you're not interested. Acha, before I go, there is one more thing that I remembered and I forgot while I was doing this video, is that if you already have a plan of HDFC Ergo and it was, let's say, Optima Secure, and you were planning to move to Optima Secure Plus, this video will now help you understand कि आपके options क्या क्या है. आप Optima Secure से Secure Plus में move करना चाहते हैं, आप Optima Secure में रहना चाहते हैं, आप दूसरे जो plans है available market में वो देखना चाहते हैं, हम आपके लिए सारे options open करना चाहते थे, and that's what we have done with this video. If you have any questions, you can always write in the comments and we'll be more than happy to answer them. If you like the video, if you found the video helpful, if it opened up your eyes to understanding कि क्या नहीं मिल रहा है ये plan में, then do press the like button and encourage us to do more videos. Thank you very much.